Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. I hope I'm clearly audible and visible. Sir, I've sent you a request to join in. Please accept it. Done, sir. Can you hear me? Yes, I can hear you. I can see you. Great. Just a second. I'm just setting up the frame. Sure. We'll start the session in next 2 minutes. Yeah. Meanwhile, let's have more people join in. So, Mr. Stockholm, before starting, wishing a very happy birthday. Thanks a lot, Arpit sir. Thanks a lot. But yeah, being your birthday, it's quite a volatile day, and we'll try to make the most of it, and we'll try to capitalize the maximum from our side. That's it, sir. आप profit करवा दें हमारे community members का. That is my birthday gift. So Yeah. that's also. Let's start the session. Yes, I'm just After setting up one, the- Yeah. Sure. You can set up. Meanwhile, I'll just do the introductions. Good afternoon, everyone. As Arpit sir said, today is my birthday. I am really happy that I'm spending my day with you all. We hope we book some profits here. So, as I said, every day we have two sessions. As I say, every day. We have two sessions every day. Morning session focuses on stocks and equity. Afternoon session focuses more on derivatives and expiry trades. So today we have our Bank Nifty expiry and Arpit sir, who is a Bank Nifty expert who काफी समय से sessions ले रहे हैं stock market. We'll focus around that, and if opportunity presents, we'll initiate trades. And also trades can be at multiple types. It could be high risk trade or a trade for everyone. So we'll mention that. So please, as per your risk appetite, take the trades. And we will be sharing the BTST towards the end of the session. Feel free to ask your questions, but we answering your question is subjective to the time. अगर हमारा एक्सपायरी में ज्यादा फोकस होगा तो हम स्टॉक क्वेरीज नहीं लेंगे. अगर हमारा मार्केट इतना मूवमेंट नहीं करेगा, इफ यू डोंट गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो वी विल फोकस मोर ऑन स्टॉक्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेशन for the people who will joining in for the first time. And I guess Arpit sir, over to you, because we are all set. We have a lot of people who have joined in, so you can start the session. Sure. So before starting with the session, very good afternoon, guys. I hope my voice is audible. Yes, sir, you are clearly audible. Okay, clear. So very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty expiry play. And today being the post the outcome of RBI policy, काफी हमने अच्छी वोलेटिलिटी देखी. And Bank Nifty is back to its old days, जो हम पहले देखते थे couple of months back, when we used to see a swing of 700 to 800 points intraday basis. And today also it's been a classical volatile day since morning. Flat opening के बाद हमने एक sharp uptick देखा 600 पॉइंट का from 51,100 to 51,700 levels. Post that, again we've seen a cut of 600 points. Now again we've seen a dip towards 51,000 और वापस हमने 100 से 150 पॉइंट की रिकवरी देखी. So Bank Nifty has come back to its original instrument जिसके लिए वो जाना जाता था हमेशा. And on the flip side, काफी बार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहती है. If we get on the wrong foot, तो definitely हमारे stop losses पे hit होते हैं. But no worries. Having said that, as Bank Nifty expiry is there, we'll focus on Bank Nifty. So starting with Bank Nifty, so far till yesterday, we were on sell on bounce stance for the entire indices for Nifty and Bank Nifty. Today, on daily scale, Bank Nifty negated the formation of lower highs after almost 7 sessions, and हमने आज stance change किया positive की तरफ. जब वो 51,200 के level निकले, वहां से हमने एक अच्छा अपटिक देखा towards 51,600, 700 levels. However, as the bigger trend in some pause, तो ऊपर जो बाइंग हुई थी वो सस्टेन नहीं हुई, पुल बैक था और वहां से हमने वापस कूल ऑफ देखा. पिछले 7 दिनों में. सो लेवल्स काफी चेंज हो गए
Now talking about बैंक निफ्टी बाइस पॉजिटिव हमारा, जब तक 50,950 स्पॉट लेवल्स के ऊपर रहता है हमारा बाइस पॉजिटिव रहेगा. So to play this, as of now we are tracking one call, that is 51,000 बैंक निफ्टी call. I'll repeat, 51,000 बैंक निफ्टी कॉल हम ट्रैक कर रहे हैं, अभी 75 के अराउंड चल रहा है. As of now we are tracking that. लेवल्स एंड किस एंट्री पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं हम डेफिनेटली अपडेट करेंगे, बिकॉज इन द मीन टाइम स्विंग्स है, सो वी आर वेटिंग फॉर सम कंफर्ट आएगा तभी हम ऐड करेंगे. ओवरऑल बायस बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है. 50,950 स्पॉट लेवल जब तक टूटता नहीं है तब तक हम बाय ऑन डिप्स सी स्टैंड प्ले करेंगे इंट्राडे के लिए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी, सो निफ्टी आल्सो हैज बीन रिमेन क्वाइट वोलेटाइल थ्रू आउट द डे. निफ्टी भी पिछले 7 दिनों से लो राइज लो लोज बना रहा था. आज डेली स्केल पे लो राइज को नेगेट किया और वहां से हमने एक अच्छा 100-150 पॉइंट का बाउंस बैक देखा. हाउएवर अपर बैंड पे वापस 25,200 के वहां पे सस्टेन ही किया एंड थोड़ा सा हमने 150 पॉइंट का कूल ऑफ देखा. पिछले 3 से 4 दिन में हमने काफी वोलेटिलिटी देखी है, मेनली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस सच एज जियोपॉलिटिकल elections, crude prices, FI sellings and all in all that is clearly seen in the rates also. काफी हमने प्रेशर देखा है, काफी हमने स्विंग्स देखे हैं. सो निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें, इमीडिएट बेसिस पे 24,950 एक इंट्राडे सपोर्ट जोन है, ऊपर में 25,150 एक हर्डल जोन है. निफ्टी में जब तक 25,150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक वन साइड वाला बायस पॉजिटिव नहीं रहेगा, बट ओवरऑल नीचे की तरफ आएगी. सो ओवरऑल मार्केट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, सो वीकली टाइम फ्रेम प्रेशर में है बट डेली टाइम फ्रेम पे पुल बैक कर रैली आ रही है, जिसके वजह से सेटअप मिक्स है. बैंक निफ्टी के हमने जो स्ट्राइक्स बारे में बात की है, 51,000 कॉल वी आर ट्रैकिंग, उसके बारे में हम अपडेट करेंगे किस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ अराउंड 75 के अराउंड चल रहा है, सो विल अपडेट ऑन दैट. इन द मीन टाइम विल टॉक अबाउट फ्यू स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं, and then we can take few stock queries and then we can come back to the option trade as well as setup wise जो हम play कर सकते हैं. So talking from a stock perspective, first from the pharma sector has given a classical range breakout on daily scale after almost 3 to 4 weeks and काफी अच्छा हमने momentum देखा है. So उसी में हमारे टॉप पिक है, 2 से 3 काउंटर है. एक तो है ग्लेनमार्क फार्मा, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप है, डेली स्केल पे रेंज ब्रेकआउट दिया है. सो ओवरऑल सेटअप वाइज हमें यहाँ से 4 से 5% का मूव दिख सकता है ग्लेनमार्क फार्मा में. सो पोजिशनली हमें 1800-1850 तक के लेवल दिख सकते हैं. 1765 अराउंड भी चल रहा है. 1700 के एसएल से आप 1850 के लिए बाय कर सकते हैं. ये है पोजिशनल आइडिया सीडीआई. Along with that, reality space also we have seen some pullback from lower support zone, जो एक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है. सो दूसरा आइडिया हमारा रहेगा ओवरऑल रियलिटी में भी डेली स्केल पे हैमर बन के नेगेशन हुआ लो रहा है इसका और की सपोर्ट जोन से ट्रेड हुआ है. सो अगेन आई थिंक वी कैन टच टुवर्ड्स 1950 2000 लेवल्स. सो ओवरऑल रियलिटी एंड ग्लेनमार्क फार्मा एज अ टॉप फार्मा सीडीआई आइडियाज. Along with that, one more BTST idea we have just put in the system also, that is Wellspin living. Wellspin अभी चल रहा है around 171 का. BTST ट्रेड है हमारा 165 के एसएल से 181 के टारगेट के लिए Wellspin living कर सकते हैं. So far we have shared 3 trades in stocks. One is Wellspin living, BTST idea, CDI and for CDI pharma में Oberoi and Glenmark we have shared. So coming back to Bank Nifty trade, I'm just looking at the chart also. 51 जो हम कॉल देख रहे हैं 51,000 का, right now it's quoting around 85-90 levels. इसका अगर हम लो देखें तो around 50 का है. So we are still waiting. 51,000 हमारा बाइस पॉजिटिव रहेगा बैंक निफ्टी में. 51,000 का हम कॉल देख रहे हैं as already discussed. I hope Anuj we have put the levels as the strike and the yes sir, we have. Okay, perfect. So 51,000 का कॉल रिपीट हम देख रहे हैं, 95 अभी चल रहा है. So we'll update on which levels to enter. In the meantime, 3 ideas we have shared to CDI, that is Oberoi Realty and Glenmark Pharma and Realty sector looking good, and Wellspin Living is a BTST idea जो हमने शेयर किया है लेवल्स के साथ. Apart from that, if we see overall setup wise, market wise, अच्छा खासा हमने लास्ट में करेक्शन देखा था, वहां से पुल बैक भी देखा. एंड सिलेक्टिव जो स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है, बट काफी स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं आ रहा है.
So please guys, जो भी pull back आ रहा है, don't take it as the same breath. सबका sector wise nature अलग है, so please make sure that you don't get onto the wrong side of the trade. In the meantime, Anuj, we can take few stock queries. In the meantime, we are tracking the Bank Nifty call also. It's quoting around 74, 75 levels. So वो देख के हम अपडेट करेंगे. बाकी in the meantime, stock queries थोड़े ले सकते हैं और जैसे opportunity रहेगी, we'll update on it. Sure, sir. Let me just scroll up and get to the first message. Sir, your view on CG Power? CG bought at 770. So I think in spite of market volatility, this counter has been quite a big outperformer. What is the buying rate? 770. 770. If you see overall, in spite of good correction in the market, the stock has been huge outperformer. Setup wise on monthly, weekly, daily, it's very strong. Daily scale में higher high lows बना रहा है, strong bullish candle है. Previous जो hurdle zone था 777 को उसको surpass करके strong hold कर रहा है. So definitely from a positional perspective, we can see levels towards 900 levels on immediate basis continue to hold. 750 के SL से आप 830, 850 तक का move देख सकते हैं CG Power. Sir, Bajaj Auto target for this weekend? Bajaj Auto. Yeah. Okay, so as news is there also, Hyundai is coming up with its IPO, and definitely whenever any company comes, related sector stocks are back in action. I'm talking about Bajaj Auto. After a stupendous rally of almost 25% from 10,000 to 12,500, एक sideways हो गया है. Immediate basis पे 11,400 का एक major support है. ऊपर में धीरे धीरे 12,000 12,200 तक का दिख सकता है. तो साइडवेज टू पॉजिटिव है, कोई मेजर कन्विक्शन नहीं है. 11,400 एक इमीडिएट मेजर सपोर्ट जोन है, ऊपर में 12,000 12,200. Sir, R Power, I think last time also I think we had a discussion on this stock, and generally such counters doesn't fall much into the technical area basket because it's such a space कि जिसमें सर्किट टू सर्किट ही काउंटर्स चलते हैं. ये आप देखोगे अगर 28 से रैली हुई है 52 तक का, वहां से हमने डिप देखा है. सो लेवल्स वाइज अगर चार्ट प्योरली देखिए तो इमीडिएट सपोर्ट है अभी इसका 40 44 के अराउंड, ऊपर में 52 का हर्डल है. बट हैविंग सेड दैट, technical doesn't work much more on such counters, so better to avoid. Sir, Idea Forge, just let me have a look. Idea Forge technology. Overall, looking at the setup wise, overall the counter is in downtrend. On the weekly scale also is forming lower highs. Daily scale पे थोड़ा सा recovery देखी है, but बड़ा ट्रेंड कोई major great नहीं है. 705 जब तक नहीं निकलता है तब तक bias mix रहेगा. So I think closing above 705 will change the setup for the stock. Till that time, consolidate to range bound. guys, we are tracking the Nifty. We will initiate a trade when we get also yeah, as we also seeing, so Bank Nifty का जो 60 चल रहा था, वहां पे हमने देखा स्विंग 90 तक का, वापस अराउंड 56 आ गया है. सो अगर बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखें, मैं कॉल और पुट दोनों लगा के रखा हूं कि जो भी अपन को मूवमेंट मिले या जो भी अपॉर्चुनिटी हो प्ले आउट कर पाए. बट एज ऑफ नाउ इंट्राडे चार्ट्स, इफ आई सी it is stuck in a range. I'll just check the intraday chart because we have to just play for next 15-20 minutes. That's why I'm going to the low smaller time frame. And जो कॉल है 51,000 का अराउंड 55 चल रहा है, ऊपर में 88-90 तक गया था पर वापस 50 तक आ गया है. फिलहाल जो है सेटअप वाइज बाइस पॉजिटिव ही है, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो मेजर थ्रस्ट. डेफिनेटली हम ट्रेड के बारे में अपडेट करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी लगेगी. इवन वी वांट दैट जो भी स्विंग्स अगर होती है तो हम प्ले आउट कर पाए. सो
it's overall sideways. That's where one dip you want. Right now the premium is quoting around 67, 68. हम थोड़े वेट ऑफ कूल ऑफ का वेट कर रहे थे जो थोड़ा सा हुआ है, सो इन अ वे इट्स बेनिफिशियल फॉर अस. अभी 65 चल रहा है, हमने ऑलरेडी लेवल्स एंटर कर दिया, अपडेट दे दिए हैं. आई थिंक डेफिनेटली ऑन द चैट बॉक्स आल्सो द लेवल्स मस्ट बी देयर. 51,000 call buying at 50 to 60, that is 50 to 60. Stop loss is 15.15. Target is 85 and 120. Yes. Guys, I hope the trade is clear. We are tracking the trade. That's why we are not taking any stock queries now. Yeah. We have already shared the BTST. And two conviction delivery ideas, that is Glenmark and Oberoi Realty. So I think we have seen some uptick in the call from 70 levels to 90 levels, and I think we'll wait for a minute. If it doesn't get, so we'll change the range. But as of now, our range is similar. Buying range will be 50 to 60. Because we want some comfort, that's why we are sticking to that. So buying range will be sticking around to 51 and upside में 85 or 120 के target. Because since morning we have seen a lot of times the premium of spot, but within a matter of next couple of seconds, again the premium have shrink, and this has been the texture for option buying for the throughout the day. The call that is right now 91, now it's back to 73. So that's so we're waiting for comfort. हमारी comfort zone में आएगा तभी हम enter करेंगे. 50 से 60 का हमारा comfort zone है, वहाँ पे stop loss रहेगा हमारा 15 का, and then targets have already mentioned by Anuj. In the meantime, guys, keep in mind right now the market texture is more of an intraday basis rather than much of an overnight basis. Positionally from index also, selective stocks में काफी अच्छी strength है, उसमें आप momentum play करते रहिए, आप positionally 1 to 3 months perspective. But from index perspective, wide swings are there. So think more from an intraday perspective rather than being carrying over a more overnight positions comparatively. So Bank Nifty also taking multiple support near 51,000 spot levels. On the upper band, 51,111 is a resistance level. जिसके वजह से हमने लेवल्स भी जो शेयर किए उसी के हिसाब से किए हैं. ये इन द मनी कॉल ये ऑलरेडी है, 73 चल रहा है. And stock ideas we have already shared. India VIX has also seen some spike. However, आज तो हमने थोड़ा सा cool off देखा है, but India VIX जो volatility index है उनमें से काफी मार्केट में उठक पटक है. So we are closely tracking the call that we have already mentioned, and I think अभी एक वो range में trade कर रहा है. And if you see the overall market breadth wise, morning में अच्छा था, but थोड़ा ऊपर से हमने cool off देखा है, and this has been the story for past couple of days. But today, relatively, market has been in the green zone of almost majority part of the day, so that is quite a healthy sign in terms of the advance decline ratio. But उसमें ही selective sectors में बहुत अच्छा rotation है, तो guys, so definitely try to play out the swings through sectors, that is stocks में अच्छा momentum है. Also, one more stock that I would like to add, as you already discussed, exchanges has been the topmost theme and it's one of the best theme. So MCX, if you see the breakout there 6020 के ऊपर, I think slowly steadily as exchange has been the flavor also. All exchange stocks are in good momentum.
धीरे धीरे हमें 6200 6300 तक का मूव दिख सकता है M6 में. So one more idea from the exchange space is M6 that is looking very promising. Sir, we have a question कि मैं 18,000 प्लस में हूँ, should I continue trading or stop for the day? I think definitely if आप 18,000 प्लस में हो, stop it guys, enjoy that because आज का market is not that easy. Definitely आप intraday scalper हो आपको रहेगा. The best way is to book your profits and done for the day. Tomorrow will be a new day. Try to play off that. Guys, the trade is not initiated yet. I can see a lot of people asking, is still trading near our buying range, but not in the range. Yes, and one more thing I want to add, I'm not in rush because the market is saying that. Because अगर मोमेंटम होता तो हम रेडी रहते आपको रेट चेंज करके भी बाय ऊपर की तरफ भेजने के लिए. बट फिलहाल मार्केट का जो सेटअप है वो इतना ल्यूक्रेटिव इतना जूसी नहीं है जिसकी वजह से हम आप बोले कि 60 के 90 पे बाय करें बिकॉज आपका पूरा रिस्क रिवॉर्ड मैकेनिज्म चेंज हो जाता है. दैट्स व्हाई वी हैव बीन सजेस्टिंग ऑन द लोअर साइड. एंड अगर आप अभी भी देखोगे सो बैंक निफ्टी वही 51,060 70 51,060 70 का राउंड चल रहा है. सो एज राइटली मेंशन बाय अनुज, ट्रेड होगा एक्टिव तो डेफिनेटली आप लोगों को मैसेज आ जाएगा. अभी 67 60 80 चल रहा है. सो डेफिनेटली वेट फॉर गाइस, बी पेशेंट. देयर इज नो रश. इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी ट्रेड्स करें एंड उसमें पैसा स्टॉक्स में बहुत अच्छा try to make the most of it. 3 long-term CDI ideas we have short share, that is the positionally ideas, and 1 BTS share idea that is well split. So the call is around now around 75 78 levels and it is trading in that range itself. ऊपर में 90 गया था, नीचे में 65 67 तक गए थे. So I'll just go on to more intraday chart. If I see immediate basis 35 is the major level, 75 चल रहा है, 73. So वही रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड as of now वही 15 से 20 पॉइंट में हो रहा है. बट विल वेट फॉर कंफर्ट लेवल तभी हम इनिशिएट करें. Sir, what's your view on defense sector? Defense sector has gone totally quite mode. If I see overall the setup wise, all the majority stocks has been on a downtrend for last quite a time. It's been almost 2 months that they have been quite pushing out that जो भी फंसा हुआ better to exit on rally on bounces. So I think sector will take some time for its reversal. Immediate basis पे as of now कोई major reversal नहीं है chart wise में. Whether we take any stock that is Mazda or GRSC or BDL, whether defense or the shipping stocks. So if you talk the HL structure also, HL still it's a range itself, but कोई major momentum नहीं है. Investment idea है, so it's a different story, but trading wise में कोई major momentum नहीं है. अगर इन्वेस्टमेंट आपका है 1 year 2 years के horizon के हिसाब से तो आप तो भी हमारा preferred pick रहेगा HL from the defense pack. That would be the preferred pick. But from a trading bet, there is no major momentum. जाइए आप सेक्टर में जैसे फार्मा, आईटी, पावर, उसमें काफी अच्छा मोमेंटम है. सो प्ले दैट स्विंग. Or as we are seeing, the bank nifty trade has been taken in that range itself. So if we see वही वापस 75 77 77 78 वही रेंज पे ट्रेड कर रहा है and spot is
है अपर बैंड में 100 and 120 के टारगेट। Guys, Bank Nifty 51,000 call, buying at 70 to 80 जो trigger हो चुका है, stop loss is 45, target is 100 and 120. Yes. So the call is quoting around 71, 72 levels itself. ये हमारी बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस ऑलरेडी बता दिया अनुज ने, एंड टारगेट भी मेंशन कर दिया है। ऑल्सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 3 PM, सो गाइस बी अवेयर। 70 वाला लो वापस 81, 82, एंड सो इसके लिए हमने पर्पसली ट्रेड दिया है बिकॉज ये रेंज में ट्रेड करा, तो हमें ये रेंज ही प्ले आउट करनी है। 70 वाला स्विंग नाउ 82, 83, it made a low 80, 67, now 84. Keep thing in mind, there is no major swings, so please play out this range itself of 20 to 30 points, 15 to 20 points for the Bank Nifty option trade. Now it's back to around 68, 67 level, 62. Let's keep thing in mind, 45 का हमारा SL है, वो आप ध्यान रखना। So right now it just got touch and it got hit. 45 का हिट हुआ है, 82 का स्विंग मारा था, अभी 45 का टच हुआ है, and the stop loss got trigger. So please make sure, please exit it, please hit the stop losses for Bank Nifty option trade. Guys, please exit the trade. Yeah, it is right now around 35, 36 levels. एक टिक देखा पर वो सस्टेन नहीं हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो प्लीज एग्जिट द ट्रेड गाइस। Guys, we have given Wellspin Living as the BTST, and जो हमारा आज का ट्रेड था, that has hit a stop loss. Please exit. Yeah, so Bank Nifty जो है update, stop loss got trigger. Just to give a summary, ideas में Wellspin Living हमने BTST दिए हैं. Apart from that, Glenmark, Oberoi and NCX have positional ideas that are looking good from 1 week to 2 weeks perspective. Immediate basis पे BTST idea हमने already share की है. Bank Nifty trade हमने दिया था, but it didn't work. No worries, but definitely we'll have tomorrow Nifty expiry, so we'll try to make sure that we get some positive trades through that. So I think if any queries are there, Anuj, we can definitely take it. I guess, sir, we did take a couple of stock queries and the overall sector queries. We have the morning session, so kal 9:30 baje we'll have a session, so we'll take all the queries there. The focus was on the expiry, but unfortunately we couldn't book any profits in that today. But tomorrow we have Nifty. We'll have a Nifty coin with us. Let's hope the Nifty coin and the Sensex can do something in this market, and we book our profits. Sure. Yeah. So thank you guys. Thank you everyone. Thanks a lot. And I understand you guys losses when everyone is furious, but stock market, we can't have 100% profitable sessions. There was a time when we used to have continuous profits. So right now we are having 2-3 sessions loss. So but we'll definitely cover. We did book a good profit in the morning sessions today and yesterday as well. So please join the morning session as well. Thank you everyone. Yeah. Thank you. Thank you.